बातें बाजू में रखकर इस देश का संविधान मजबूत कैसा हो, डेमोक्रेसी मजबूत कैसी हो और दुनिया का सबसे बेहतरीन देश कैसा बने, इसके ऊपर सबका एकमत होना चाहिए। नो डाउट कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को एक मौका दिया, उनके तहत उनको काम करने का मौका मिला। हजारों वर्ष से जो जातीयवाद था, पिछड़े हुए लोग थे, अनटचेबिलिटी थी, वो दूर करने का मौका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान के माध्यम से मिला। ये संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन और सुंदर संविधान है। इसमें फंडामेंटल राइट से लेके आप देखेंगे पूरा देश यहाँ पर बैठा है, तमिलनाडु से लेके जम्मू कश्मीर, नागालैंड से लेके सौराष्ट्र, हर स्टेट के लोग, उनकी भाषा, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, उनकी रीति रिवाज अलग अलग है, फिर भी विविधता में एकता है। और ये सारी देन संविधान की है। और इस संविधान का प्रचार और प्रसार करने के लिए हम सारे लोग मिल के काम करें। मैं 2008 में महाराष्ट्र का कैबिनेट मिनिस्टर था सोशल जस्टिस में। वहाँ के मुख्यमंत्री, तब के मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव जी देशमुख को मैंने कहा कि संविधान दिवस हम मनाएंगे। उसके पीछे मकसद ये था मेरा कि संविधान क्या है, संविधान क्या है, लोगों में संविधान के प्रति आस्था रहनी चाहिए, कानून और सभी चीज़ लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। इसके लिए हमने वो संविधान दिवस मनाया। उसके बाद में अब देखेंगे, आप ही परसों मोदी साहब बोल रहे थे, वो मुख्यमंत्री रहे थे, तब उन्होंने संविधान समर्थन यात्रा निकाली। धन्यवाद। आप देखेंगे कि हमारे नेता राहुल जी गांधी, धन्यवाद, उन्होंने भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली। और भारत जोड़ो जीत सिंह साहनी 3 मिनट सर, 3 मिनट मैडम, 3 मिनट समय लिखा हुआ है। आप बोले विक्रमजीत सिंह साहनी, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी, प्लीज। Chairman sir, I'm sorry to point out that discussion meant on the glorious journey of 75 years of the Constitution and giving suggestions thereof were predominantly marred. Instead of coming out with suggestions, we have spent more time in accusing each other. Sir, Indian Constitution guarantees right to equality on the basis of race, caste, class, religion or gender. But despite 75 years of independence, we continue to witness atrocities based on caste and religion, and gender equality enshrined in our Constitution remains elusive, and the data reveals that 87 rapes occur every day in India and 49 crimes against women are reported, not to talk about continuation of disparity in pay promotion. As regards social equality enshrined in our Constitution, Chairman, sir, the top 1% of the Indian population owns 40 to 50% of country's wealth. I think we will have to take more initiatives for inclusive growth to reduce poverty and income disparity of the gap between rich and the poor. मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ, we should take this opportunity to pay gratitude to the entire Sikh community who suffered the most by losing over 10 lakh lives for sake of India during partition. It is a historical fact that Sikhs were promised special treatment at the time of Constituent Assembly. Sikhs are Indian not by chance but by choice. As regards to freedom to practice own religion, I would like to remind the House supreme sacrifice of Shri Guru Tegh Bahadur Ji for sake of religious freedom against forced conversions of Kashmiri Pandits. Yet we have seen in recently times the reclaiming religious places of worship is really threatening the spirit of tolerance. I think it is a futile discussion to rake up the past, and we should respect the Places of Worship Act,
1991, which mandates maintaining status quo as on August 15, 1947. मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो रायसीना हिल जहाँ अभी साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक और पार्लियामेंट हाउस है, ये भी कभी गुरुद्वारा रकाबगंज की थी। पर इन चीज़ों से ये इतिहास है। आज हमें जॉब, सोशल इनइक्वालिटी, पॉवर्टी को एड्रेस करना है। आर्टिकल 243 emphasizes empowering gram sabhas and panchayats. Article 245 talks about relation between union and state, and cooperative federalism requires synergy between union and states. Our constitution provides a balancing synergy between executive, legislature, and judiciary. Sir, if we are discussing the Constitution today, it will be incomplete if the concerns of the last man in the line, that is our poor farmers, are not addressed expeditiously, and there is contentment among farmers as part of social and economic justice. As a preamble, we should address it. Last, Abraham Lincoln said democracy is a government of the people, by the people, for the people. I think in a lighter vein, I would say it has acquired a new meaning. It is OFF, of the people, FAR, for the people, and BUI, by the people. Thank you. माननीय सदस्यगण, जो समय आपके लिए अलॉटेड है वो मैं नाम पुकारने के पहले बता रहा हूं। समय मेरे हाथ में नहीं है, समय पहले से तय होता है। समय तय होने का फार्मूला आप जानते हैं। नंबर 2, कांग्रेस का समय ऑलरेडी काफी पहले खत्म हो चुका है। चंद्रकांत जी का आया अलग से, तो 3 मिनट उनको अतिरिक्त समय दिया गया। मेडन स्पीच कंसीडर नहीं हुआ है, इस कारण उन्हें 3 मिनट का समय मिला। थैंक यू। माननीय संजय राउत जी, 3 मिनट। I'm helpless. नहीं बोल रहा हूँ संजय जी, I'm helpless. Please follow the time. मेरे हाथ में नहीं है, प्लीज सर। ये आप सबने समय तय किया है। कहाँ समय है? 3 मिनट में संविधान के ऊपर बोले। ये क्या ग्लोरियस जर्नी, बोले 25 ईयर्स और 3 मिनट में हमको आप बोलने। अरे आप तो 2 मिनट में बोल सकते हैं, आपकी क्षमता में जानता हूं। प्लीज सर, संविधान पे चर्चा हम कर रहे हैं और 5 मिनट पहले यहाँ, लेकिन इस देश के चोर और डकैत भी प्रामाणिक रहे हैं। इस देश के चोर और डकैत भी प्रामाणिक रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम में उनका भी सहभाग रहा है। ब्रिटिशों के खजाने लूटकर यो डकैत उस जमाने के महाराष्ट्र में और चंबल में क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी को देते थे हमारी ये मूवमेंट चलाने के लिए। लेकिन वहाँ से तो ना कोई स्वतंत्रता संग्राम में रहा, ना किसी लड़ाई में रहा, फिर भी ना वहाँ का माल कभी जनता के और देश के लिए। बात ऐसी है कि मुझे डर लगने लगा था जब वहाँ से संविधान की बड़ी चिंता हो रही थी। संविधान के ऊपर जो आपका जो प्यार मैं देख रहा था, मुझे इतनी चिंता लगी कि आप सचमुच संविधान खतरे में आ रहा है। जब आप लोग कभी किसी के ऊपर ज्यादा चिंता दिखाते हो, प्यार दिखाते हो, तो खतरा बढ़ जाता है। सर, ग्लोरियस जर्नी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात हम करते हैं, लेकिन ये ग्लोरियस जर्नी 2014 में खत्म हो गई। 2014 में ग्लोरियस जर्नी खत्म हो गई। अगर सचमुच ये 400 पार का नारा सच हो जाता तो संविधान बदलने में आप लोग पीछे नहीं हटते और आज का डिबेट का विषय होता कि संविधान बदलना क्यों जरूरी है। ये आज हमारा आज का विषय होता। हम भारत के लोग, ये हमारा संविधान की शुरुआत है। हम भारत के लोग, लेकिन 10 साल में भारत गायब हो गया और हम मोदी के लोग, जहाँ भी जाओ जो मोदी के लोग हैं वही बैठेगा, संविधान की चेयर हो और कोई हो, भारत गायब हो गया है। हमने प्रधानमंत्री जी का भाषण लोकसभा में सुना, रिप्लाई था, जोरदार था और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का बहुत बड़ा ऐलान किया, जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन। मैं तो ये बोल रहा हूँ ना, जब आपको चिंता भ्रष्टाचार की होती है तो भ्रष्टाचार बढ़ जाता है।
सर 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 कॉन्क्लूड संजय जी। प्रधानमंत्री जी बहुत हमारे मिठास वाणी के नेता है, लेकिन वाणी की मिठास अंदर के भेद नहीं खोलती। कॉन्क्लूड। देखो मोर कितना सांप भी खाता है। हाँ, संजय जी कॉन्क्लूड करें। बाहर आता है। सर हमारा संविधान जो है सर, उस संविधान में हमारे संविधान अलग अलग धर्मों को और जातियों को भारत की संजय जी, मैं दूसरा नाम 140 बुला रहा करोड़ हूं। की आबादी संजय जी, को प्लीज। एक देश की तरह जोड़ता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि हम सब 140 करोड़ एक है तो देश सेफ है। माननीय अजीत कुमार भूयान, माननीय अजीत कुमार भूयान, आई एम हेल्पलेस। माननीय अजीत कुमार भूयान, प्लीज 3 मिनट्स। मैंने बताया मैं समय मेरे हाथ में नहीं है, प्लीज। थैंक यू। अजीत कुमार भूयान। Deputy Chairman, sir. Yes, speak. Thank you, Deputy Chairman, sir. As you all know, I hail from that remote corner of the country, which is most people of mainstream India calls area inhabited by jungle people. माननीय संजय राउत जी, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, बोल रहे हैं अजीत कुमार भूयान। आप बोले नहीं तो आपका समय खत्म होगा। अजीत कैसे जाएंगे साहब? प्लीज, आप बोले। Being citizen of that part of the country for which no one cites safe, Manipur is the latest example. I can tell this house what constitution means to us. Geographically, a chicken neck in Assam-Bengal border connects us with mainland, but in reality it is the constitution which binds us with this great nation. Constitution for us was a promise of equality, promise to safeguard our culture and linguistic identity, promise of fair share in resources, etc., gave us confidence to be part of this nation. Constitution promised to uphold diversity of the country, and we felt assured. We hope that small nationalities living in Northeast would be allowed to flourish. Constitution promised to uphold diversity, secularism. We felt assured that our unique religious beliefs would not be trampled. Constitution promised federalism. We hope that we would have right over our resources. We would be able to sort our path for future on our own. This is the beauty of our Constitution. It created this nation. Very foundation of this nation is the Constitution. But with heavy heart, I have to say before this House that during last 1 decade, there is an attempt to breach every promise made to us. Our culture, our identity, and our very existence is under threat due to inactions of this government. Manipur is an example. The manner in which the central government is allowing the state to rot is nothing but a breach of constitutional promise. This government in its attempt to impose this ideology of one nation, one culture, is trying out our very roots. Ka is a glaring example of such attempt, an act brought to confer citizenship to foreigners by breaking solemn promise made by the Indian state to people of Assam in 1985 through Assam Accord. A state which is forced to take burden of large numbers of foreigners entering till 1971 will now take further burden. 2 minutes, sir, because no 2 minutes, sir, please. Because of that hindrance. Conclude. Yes, I am from Northeast, sir. Please don't neglect us. That is one to. We are not neglecting. The time is limited. Please conclude. No. 1 minute. 1 minute. No, 1 minute. Please conclude. One minute, sir. Conclude, sir. You have already taken more than 30 seconds. Please conclude. Conclude, please. Conclude. Let me conclude, sir. Since we have been opposing construction of big dams in Arunachal Pradesh,
But without consulting people of the state, the dams are being constructed. And there are so many issues, but I want to say, I would like to say, Thank you. Thank you. due to paucity of time, Thank you. the You have taken already 1 minute Chief more, Minister please. of Assam has been openly saying that he does not need Muslim votes Thank and you. support. Thank you, Mani Sir, Mannan Kumar does Miss. the Constitution Mani allow? Mannan Kumar Miss, please. 7 minutes, please. Please. Sir, the basic structure of Indian Constitution is a set of fundamental features that cannot be amended normally by the Parliament. These features include supremacy of Constitution, separation of powers. The Constitution establishes a separation of power between the legislature, executive, and judicial branches of the government. Federalism. Constitution establishes a federal system of governance between the union and the states. Rule of law. The Constitution establishes our commitment to the rule of law, independence of the judiciary. The Constitution establishes an independent judiciary that can invalidate government actions or violate legislations. Secularism is the fifth criteria. The landmark judgment of Keshwanand Bharati is a leading judgment on the basic structure doctrine of the Constitution. Sakti Prasad case in 1951 ruled that Parliament can amend any part of Constitution under the Article 368, including fundamental rights. Same was the verdict of Supreme Court in Sajjan Singh's case in 1965. However, in Golaknath's case in 1967, the Supreme Court reversed its earlier views that the fundamental rights can be amended, and it said that the fundamental rights are not amenable to the parliamentary restrictions. In 1973, the Keshwanand Bharati's case, the Supreme Court held that although no part of Constitution, including fundamental rights, was beyond the parliamentary amended powers, but the basic structure of the Constitution could not be abrogated even by the Parliament. The judgment, in fact, said that the Parliament can only amend the Constitution and not rewrite it, meaning thereby that the power to amend it is not the power to destroy, and it further held that judiciary can strike down any amendment passed by the Parliament that is in conflict with the basic structure of the Constitution. Again, in Indira Gandhi versus Rajnaran case 1975, the Supreme Court applied the theory of basic structure and struck down Clause 4 of Article 329A, which was inserted by 39 Amendment in 1975. Sir, in 1980, Minerva Mills case further strengthened the basic structure doctrine. The judgment struck down 2 changes made by 42nd Amendment. In 1981, the Bowman Rao case, Supreme Court again reiterated the doctrine of basic structure.